Hello, welcome to this physics video. In today's video, we are going to learn itself about how to find out the internal resistance of the cell. In the previous video, we have the discussion that was regarding to this EMF and terminal potential difference. So, there we come to know that this EMF and terminal potential difference will be equal to each other if no current is drawn, if I is 0. Okay, no current drawn from the cell, or either we can say that when cell is in open circuit, ठीक है। तो जो हमारे पास ईएमएफ है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो सकती है जब उससे कोई भी करंट ड्रॉ ना किया जाए। ओके, बट इफ़ यू आर गोइंग टू हैव ओवर देयर that you are going to draw the current, ठीक है। so that time this EMF is greater than that of terminal potential difference। तो ये हमारे पास कब होता है when current drawn from the cell, now how we have written this expression, this was the second point, here it was the first point। so we are known over there EMF, it is equal to terminal potential difference plus that voltage drop which is inside the cell। okay, so there we come to know that this if no current is flowing from that cell, so therefore this voltage drop which was inside of the cell, it becomes 0 and E equal to V, it becomes E equal to V। and over there if current is going to draw from the cell, so some of the voltage get reduced inside the cell, so therefore that this terminal voltage we can say that it is lesser from the EMF by this factor V dash। okay, now in today's video we are going to determine this relations of internal resistance, this EMF and terminal potential difference, or otherwise it is determination of internal resistance। okay, so this is over here। now for this purpose we are supposing that I'm having a cell whose maximum voltage is, which can provide maximum voltage, it is E। ठीक है, तो मैक्सिमम वोल्टेज हमारे पास किससे होती है, ई से होती है। सो ऑलरेडी ओवर हेयर यू कैन सी दैट ई इज व्हाट, मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक है, सो व्हेन इट विल प्रोवाइड मैक्सिमम वोल्टेज व्हेन इट इज इन ओपन सर्किट। ठीक है, सो एज इट इज मेंशन्ड ऑन द सेल दैट दिस विल प्रोवाइड 1.5 वोल्ट। ठीक है, ये क्या करेगा, 1.5 वोल्ट प्रोवाइड करेगा। वट एक्चुअली व्हेन वी आर यूजिंग दिस इन द सर्किट, सो इट इज प्रोवाइडिंग ओवर देयर दैट ऑफ 1.4 वोल्ट। ठीक है, तो इसके ऊपर मार्क कितना होता है, 1.5 वोल्ट, लेकिन जब इसको सेल के अंदर उस सर्किट में यूज़ किया तो इसने कितना प्रोवाइड किया, 1.4। तो ये क्या बना उसका, ये है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और जो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंस कितना है दोनों के बीच का, दिस इज वी डैश, सो इट इज़ ऑफ 0.1 वोल्ट। ठीक है, तो ये जो वी डैश है मतलब कि ये सेल के अंदर जो वोल्टेज है वो अपने इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, सो देयर फॉर दिस इज ओवर हेयर दैट वी आर गेटिंग दैट इफ देर इज नो रिडक्शन इनसाइड, तो अगर उसके इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई भी वोल्टेज ड्रॉप ना हो, सो दैट टाइम व्हाट विल हैपन, ई एंड वी विल बिकम इक्वल। so maximum voltage is that E, and it is having its internal resistance that it is R, let it we have internal resistance R। now it is connected across any bulb, here it is bulb, so bulb is a resistor which will provide the resistance। now it is in the closed circuit। okay, so when it is in the closed circuit, so how much is the total current which is coming out, so you will find over there that the total current which will come out from the positive terminal of the cell, it will pass through this resistor। ठीक है, तो रजिस्टर से कितना करंट जा रहा है, आई। सो हाउ मच इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ दिस रजिस्टर, तो इस रजिस्टर के बल्ब के दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, सो दिस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो इसमें से कितना करंट जा रहा है, आई, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर। ठीक है, एंड देयरफॉर ओवर हेयर जो हमारे पास टोटल करंट ऑफ द सर्किट है वो कितना बना, तो टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज। ठीक है,
टोटल वोल्टेज कितनी आपने सप्लाई की इसमें अपॉन में दैट टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ओम्स लॉ की हेल्प से हम इसको यहाँ पर नोट डाउन कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास क्या बन गया, टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ जो वोल्टेज सप्लाई है अपॉन में दैट टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास जो सप्लाइड वोल्टेज है, इट इज़ ई। मैक्सिमम कितना है ई अपॉन में दैट इंटरनल जो टोटल रेजिस्टेंस है। सो टोटल यू विल फाइंड देयर आर एंड दिस स्मॉल आर, सो बोथ आर गोइंग टू बी इन अ सीरीज, therefore it is total resistance. So we are getting over here, this is that expression to find out total current. ठीक है, and therefore if I will put this over here, so what will be V equal to I R, as we are having this potential difference between the two terminal of the resistor, which is V equal to IR. So I is what, total current. So that's the total current, it is given by E by R plus R into R. Okay, this is that terminal potential difference. Now from this that you can go for the calculation of this that of internal resistance. Okay, so or either, because our demand is to find out this small r, our demand is to find out this small r. Okay, so therefore what you can do over here, you can take this value to the left side, so therefore it will become r plus r into V is equal to ER. This will be there, and if this V will be taken in the denominator, then to this side I am going to solve this one. So finally I will get that it is R plus R equals to E by V into R. Okay, and if I will take this R to the right side, then here it will left only with E by V R minus of R, or either take the R common from this one, it is E by V minus of 1 into R. So this is internal resistance of the cell. Okay, this is the formula to find out internal resistance. Similarly over there that you can do one thing, this is also the relationship between EMF terminal potential difference and that of internal resistance. Okay, so this is the other way of asking the question, same question in another method. Now we can also, this is the method number 1 which I have implemented over here, method number 1 for the calculation of this internal resistance. Okay, and there we can also do this method as well. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर देखो जो सेल था, ठीक है, तो सेल मैक्सिमम कितनी वोल्टेज सप्लाई कर रहा था, मैक्सिमम सप्लाई कर रहा था ई, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या था आर। ठीक है, एक्सटर्नल में हमने क्या यूज़ किया, एक रजिस्टर यूज़ किया, तो इसलिए इस रजिस्टर में जो रेजिस्टेंस था दैट वाज कैपिटल आर। ठीक है, तो करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आता है, यही करंट इसके इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से पास करता है, सेम इज गोइंग टू पास फ्रॉम दिस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो एक्सटर्नल के पास जो वोल्टेज हमारे पास इसके दो टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना बना था, आई आर। ठीक है, और जो इसमें इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था वो कितना था, वी डैश। ठीक है, तो ये इसके अपने अंदर इतनी वोल्टेज यूज़अप हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। सो हाउ मच इज़ दैट, तो ये आई करंट दोनों में से, क्योंकि सीरीज़ में है तो आई करंट दोनों में से पास कर रहा है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है आर, तो इसलिए ये वी डैश कितना हो गया, आई आर। ठीक है, अब आपने टोटल कितना सप्लाई किया था ई, और सर्किट में एक तो बल्ब ने यूज़ किया, दूसरा उस वोल्टेज का यूज़ जो था वो किसने किया, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस निकल लिया। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास वी, टेक दिस वन टू द लेफ्ट साइड and you will get that it is E minus of V and which is equal to V dash, लेकिन V dash क्या है, I R है, it is I R। ठीक है, so thus we can have over here R is what, so bring this that of I in the denominator, this is internal resistance over here, so one of the formula that you can use for the internal resistance. Now here just to check that जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था उसके दो टर्मिनल के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस था, आई आर। ठीक है, तो यहाँ से हाउ मच इज आई,
मतलब कि टोटल करंट है इसमें से जो पास कर रहा था तो वो कितना हो गया, तो V बाई आर यू कैन नोट इट डाउन ओवर है, ठीक है। सो दस पुट दिस वैल्यू ओवर है, देयरफॉर E minus of V upon में V upon R that will come in the numerator and it is equal to small r. So thus separate the denominator. So we are getting, this is the formula of internal resistance, ठीक है। So either you can take it is as a relationship between E, V and small r, or either that it is formula of determination for internal resistance. Okay, so this you can do over here. Now importantly to note over here, how to find out total current from that cell whose EMF is given to us. Okay, so this is that formula, that how much is the total EMF of the cell and how much is the total internal resistance. So you need to include its resistance as well. So therefore then we will have total resistance. So this is the formula to calculate that total current of the circuit. Now let us look over here with the help of this numerical. Okay, so example that I am going to suppose, it is example number 1. Okay, so we are supposing over here कि हमारे पास एक स्कूटर है और उस स्कूटर के अंदर हमने एक बैटरी का यूज़ किया और इस बैटरी की जो ईएमएफ है वो 6 वोल्ट है, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना वो सप्लाई कर रहा है, 6 वोल्ट को सप्लाई कर रहा है। क्या सप्लाई कर रहा है, जो स्कूटर के अंदर हमने बैटरी यूज़ की है, ठीक है। इफ़ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज, तो उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ड्यू टू ऑफ इट्स ओन केमिकल इट इज़ ऑफ 0.2 ओहम, व्हाट इज़ द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन। तो इससे मैक्सिमम करंट हम कितना ड्रॉ कर सकते हैं, व्हाट इज़ द मैक्सिमम करंट विच कैन बी ड्रॉन, ठीक है। सो ओवर हेयर दैट मैक्सिमम करंट विल बी, सो फॉर दिस वी आर नोन विथ वन थिंग, हाउ मच इज़ द करंट, जो टोटल करंट है विच इज़ ड्रॉन फ्रॉम दैट सर्किट, तो जिसमें ईएमएफ ऑफ द सेल यूज़ की जाती है, ठीक है। सो वी साइड ओवर देयर दिस इज व्हाट, ई बाई आर प्लस आर इज दिस, ठीक है। नाउ हेयर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज नॉट गिवन टू अस, दे आर सेइंग मैक्सिमम करंट दे आर सेइंग, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया मैक्सिमम करंट के लिए हमारे पास एक्सटर्नल, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना कम होगा उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, करंट वहाँ पर आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास डिनोमिनेटर में अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, ठीक है, जैसे हमने पहले क्या यूज़ किया था, बल्ब हम यूज़ कर रहे थे, ठीक है। सो इफ़ दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज 0, सो देन वी आर गेटिंग दिस करंट विल बी ई बाई आर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर और स्मॉलर हो जाता है, सो देयरफॉर दिस करंट विल बिकम मैक्सिमम। ये सबसे ज़्यादा करंट उस वक्त ड्रॉ किया जाएगा जब उसमें सबसे कम रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। सो दस आई विल हैव ओवर हियर दिस इज 6 EMF is there and it is of 0.2, which in turn 0 will go with this 6 and it is become 30 ampere. This is the maximum current which will be drawn from that cell. इतना मैक्सिमम करंट ड्रॉ किया जा सकता है। नाउ लेट अस टू टेक दिस अनदर एग्जांपल, एग्जाम्पल नंबर 2। व्हाट इज दैट एग्जाम्पल, इसमें बोला गया है कि हमारे पास यू हैव टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल हुज EMF इज ऑफ 2 वोल्ट, ठीक है। तो इसका EMF 2 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ दिस सेल ड्रॉप्स टू 1 वोल्ट व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओहम इज कनेक्टेड अक्रॉस इट, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, जब आप 10 ओहम का रेजिस्टेंस जो है उस सेल के अक्रॉस कनेक्ट करते हो, सो एट द टाइम इसमें क्या हो जाता है, 1 वोल्ट जो है वो ड्रॉप हो जाती है, मतलब कि एक जो 1 वोल्ट है वो इसने यूज़ कर लिया, ठीक है। सो दिस दैट अ सिंपल डायग्राम विच इज़ ऑलरेडी नोन टू अस। ये इंटरनल रेजिस्टेंस आप ऐसे शो करोगे, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारे पास इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम का हो गया, इंटरनल आपने फाइंड आउट करना है, EMF आपके पास 2 वोल्ट की ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। एंड इट इज सेड ओवर हेयर कि जो हमारे पास यहाँ पर ये रजिस्टर कितना यूज़ कर रहा है, इट इज़ यूजिंग ओवर देयर दैट ऑफ 1 वोल्ट, ठीक है।
So how much is the internal resistance? And right now we have calculated the formula. It is what? E by V minus of 1 into R. This is the formula of internal resistance. So E is how much? It is 2 and V is 1 minus 1 and into R. R external resistance is there 10. So thus we get it is as 2 minus of 1 into 10, which in turn is equal to 10 ohm. So this is the internal resistance. Okay, so note down over there कि हमारे पास जो कितनी वोल्टेज इसने यूज़ की होगी. सो चेक ओवर देयर 1 वोल्ट किसने यूज़ की. आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, E इज इक्वल टू वी प्लस वी डैश, है ना. तो E माइनस वी इज इक्वल टू वी डैश. तो इंटरनल ये जो रेजिस्टेंस है उसके पास कितनी वोल्टेज यूज़ हो जाती है. सो दिस इज टोटल कितनी थी 2, सर्किट में कितनी आई 1, और कितनी इंटरनल ने यूज़ की, इट इज़ 1 वोल्ट. ठीक है, तो इसलिए 1 वोल्ट जो है इसने यूज़ की, 1 वोल्ट इसके पास थी, और टोटल सप्लाई 2 वोल्ट की आ गई. सो दिस वॉज ओवर देयर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2. यही तो हम लिख रहे हैं, दैट इट इज़ equal to V plus V dash. Okay, so this is all from my today's video. Thank you for watching.